गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल बच्चों? सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट? और आज हम और एक चैप्टर लेके विल बी डिस्कसिंग अनदर चैप्टर टुडे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल्स। जो आपको पता है आज का चैप्टर का डिस्कशन है बच्चों। तो आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन एट देयर होम्स। हमने बहुत सारा चैप्टर्स अभी तक कवर कर लिया है बच्चों, तो आज हम ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का करेंगे। तो we'll be doing the questions, and before that we'll be doing the content as well. Okay. So let us begin. I hope everyone has joined so far. सब लोग ज्वाइन कर दिए होंगे, आई होप सो। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ओके, ओके। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ डिस्कशन बच्चों। आज आपका ये चैप्टर है। So this is a very interesting chapter. You already know about it. हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इट्स ऑलरेडी टाइम, आई गेस इट्स ऑलरेडी 8:16. So we should begin now because we have to discuss the questions as well, right? So we should spend little bit less time in content part. And this is important, children, what I think so, because ये आप थोड़ा सा कंटेंट अगर रिवाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में इजी होगा बच्चों। ठीक है, सो आज का हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल्स। तीन चीजें हैं यहाँ पे, हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है कम्युनिकेशन, और तीसरा है सेफ्टी रूल्स। Along with that also we'll be discussing regarding the maps and the directions which are also a part of this chapter. Okay, so let us begin. सभी बच्चों को और एक बार गुड इवनिंग एंड वेलकम। ओके, द फर्स्ट वर्ड कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट। बच्चों, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, राइट? सो ट्रांसपोर्ट, आपने जितने भी आपको आइडिया होगा पहले से, सो ट्रांसपोर्ट मींस मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? उसमें पीपल हो सकता है, गुड्स हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, इंसान हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं या फिर चीजों को लेके जाते हैं, दैट वी कॉल्ड इट एज द ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स शिफ्टिंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज दैट इट मीन्स मूविंग पीपल एंड थिंग्स। थिंग्स मीन्स जो आपकी चीजें हैं, गुड्स वगैरह चीजें हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज वेरी क्लियर, राइट? ऑल ऑफ यू हैव ऑल्सो एन आइडिया। सो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? Okay, transport, how we need to go from one place to another, how we need to move from one place to another, that we need to understand. So before going into the concept, I'll be giving you a little bit of idea as well. जैसे कि like when men used to live like nomads, मतलब जब अर्ली men नोमैड की तरह रहता था, कोई एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करता था, एक जगह पे सेटल नहीं हुआ था, राइट? तो तभी के टाइम से हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन वाज समथिंग डिफरेंट। पहले क्या होता था ना, इन द अर्लियर पीरियड व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली, सो ह्यूमन बीइंग्स व्हाट दे डिड, नोमैड्स बेसिकली एनिमल्स के पीठ के ऊपर लाद के वो चीजों को लेते थे। दे यूज्ड टू use the animals like donkey and horses, elephants and all for carrying the things from one place to another, राइट? सी ये होता था। उसके बाद देयर वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद व्हील का यूज करके चीजों को एक जगह दूसरी जगह मतलब द थिंग्स वर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So transportation means moving people and things from one place to another. But nowadays we have different modes of transport, different ways of modern transport. ऐसा नहीं कि अभी जैसे एनिमल्स को यूज करना, एनिमल्स अभी भी यूज होते हैं कुछ स्पेसिफिक जगह पे बच्चों, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड है वो चेंज हो गया है, राइट? बिकॉज ऑफ लाइक व्हाट द इन्वेंशंस एंड ऑल,
because of change in the society and also we have different ways of, we have explored actually. Human beings have explored now the different ways of transport. So basically we have three ways of transport. The transport on the land, which we called as either land transport, transport in water, things will move on the surface of the water and inside the water as well. That is called as the water transport. Then we have the air transport, where the transport will be done through the air. So land, water and air are the medium through which चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है. Okay? Or what we can say, like land, water and air are the mediums through which things or goods will be transported, will be sifted, will be moved from one place to another. Right? चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट हमारा है लैंड ट्रांसपोर्ट. राइट. सो लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता है, लैंड का मतलब आपको पता है. Okay, so land transport is also called as the land transportation. So in this transportation, what we do, we move people, animals and goods from one place to another on the land. जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर हम इंसानों को, एनिमल्स को, गुड्स को, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं. Right? So this is called as land transportation. So the transportation which is done on the land is called as land transportation, in which we transport or we move people, animal and goods from one place to another. Right? चलिए अभी देखते हैं कि land transport हमारा कैसे हो सकता है. So land transport can be of two types. One is the road transport and the other one is the rail transport. So let us talk about first हम road transport के बारे में पढ़ेंगे अभी बच्चों. So हमारा जो land में हमारा जो roads हैं, we our vehicles run on the roads, right. रास्ते के ऊपर, roads के ऊपर हमारे vehicles चलते हैं. So you can see like bus, car, truck, bike, scooter, then rickshaw, bicycle, ये सारी जो चीजें हैं, these vehicles they run on the road. रोड के ऊपर ये रन करते हैं. So they all combinedly they are under the road transport. So जब हम कार, बस, व्हीकल, ट्रक या फिर आपका बाइसाइकिल वगैरह को रोड पे चलाते हैं, उनको हम रोड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. तो आपने देखा होगा कि जो हमारा बाइक है या फिर स्कूटर है बच्चों, that we like few very less people like the rider and the passenger only can travel from one place to another, and when we have more people we can use a car and buses वगैरह ज्यादा लोगों को लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए यूज होता है ऑन द रोड्स. रास्ते के ऊपर, रोड्स के ऊपर उनको यूज किया जाता है. और ट्रक्स वगैरह जो होते हैं, मेनली उनको यूज किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स. गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में थ्रू रोड के जरिए. राइट. सो बिकॉज इट इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट, सो रोड ट्रांसपोर्ट इज in the land transport only. So through the roads only, the trucks will carry the things from one place to another. Okay. Goods and things, both of them, but trucks basically they carry the goods. तो गुड्स मतलब चीजें, सामान. राइट. तो हम दूसरे रेल ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं बच्चों. जो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है, यस, सो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है जो कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर व्हीकल्स रन ऑन द रेलवे ट्रैक्स. ओके, व्हीकल्स विल रन ऑन द रेलवे ट्रैक्स. राइट. एक मिनट बच्चों, ये मैं आपका बंद कर दी थी. ओके. सो इन रेल ट्रांसपोर्ट बेसिकली व्हाट विल हैपन, like the vehicles will run on the railway tracks. So we have specific vehicles like trains, गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, फिर हमारा मेट्रोज वगैरह जो रेलवे ट्रैक के ऊपर चलता है. ओके. तो व्हेन यू हैव टू लाइक शिफ्ट a large number of people from one place to another, you cannot use a bus or a car, right? Even the bus will be like smaller in size for to accompany a large number of people. So trains वगैरह में बहुत सारे लोग उसमें travel कर सकते हैं. More than thousands of people can travel in the train.
एंड व्हेन आपका गुड्स वगैरह जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा गुड्स ट्रेन है, और पैसेंजर्स जब ट्रैवल करते हैं उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द पैसेंजर ट्रेन वेयर द पीपल विल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे हमारे सारे सिटीज स्टेट्स वगैरह दे आर कनेक्टेड बाय रेलवेज, राइट? सो वो कनेक्टेड है हमारा रेलवेज में। सो एंड दे हेल्प टू transport people from one place to another, and not only that, they also help to transport the goods from one place to another as well, right? Yes. और हमारा एक है लाइक द मेट्रोज। मेट्रोज हमारा क्या होता है बच्चों, जैसे कि कुछ जगह पे मोस्ट ऑफ द सिटीज वेयर वी हैव आल्सो मेट्रोज, वेयर अंडरग्राउंड में हमारा ट्रैक बिछाया जाता है जिसके ऊपर हमारा मेट्रोज चलते हैं। दे आर अंडरग्राउंड, राइट? Yes, so these are basically rail transport which are included under the land transport. So land transport can be of two types, rail transport and the road transport. Okay, I hope you all have understood. Goods train, yes. Now let us talk about the water transport. So water transport basically are those transport medium that goes through the water surface, that goes through the water surface, excuse me. Yes, that goes through the water surface. So basically when you talk about the boat, ship, steamer या फिर submarine, ये सारे जो चीजें हैं बच्चों, इसमें बोट हम यूज करते हैं मोस्टली लाइक फॉर एग्जाम्पल, like you have to travel for what, for short distances on the surface of the water, then we have it, we called it as the, we use a boat for it. So boat में हम पानी के मीडियम से या फिर लेक और ओशन के मीडियम से हम जब कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, then we use a boat. So boat में थोड़ा सा कम लोग जाते हैं बच्चों शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ऑन द ट्रेन, या एंड देन वी हैव द शिप। शिप क्या होता है, स्टीमर, ये सारी जो चीजें हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये दे कैन कैरी लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ऑल्सो द गुड्स। ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसमें जा सकते हैं, गुड्स वगैरह भी जा सकता है। और हमारा एक है सबमरीन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Submarine basically are water transports where these machines, these vehicles actually they run inside the water. So जैसे कि आप सी के एडवेंचर में या फिर ओशन के एडवेंचर में जब हम चलते हैं बच्चों, तो सबमरीन हम यूज करते हैं, दैट गोज इनसाइड अंडर द वाटर, पानी के नीचे उसको हम यूज करते हैं। लेकिन बाकी हमारा बोट, शिप और स्टीमर वगैरह ये पानी के ऊपर होता है। सो दीज व्हीकल्स रन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो वाटर ट्रांसपोर्ट बेसिकली इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर द गुड्स, चीजें भी लेते हैं बच्चों, उसके साथ साथ पैसेंजर्स ऑल्सो, पीपल ऑल्सो गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट uses the air as the medium, एयर को ही ओके, एयर ट्रांसपोर्ट आपका क्या होता है, दैट यूजेस एयर एज द मीडियम टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो आपका जैसे है हॉट एयर बलून, hot air balloon we have, you can see rockets वगैरह, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट जो कि हाई स्पीड में चलते हैं, एयरशिप्स आपने देखा होगा, एयरशिप कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, दैट यू दैट फ्लाइज इन द एयर हाई अप इन द स्काई, यू मस्ट हैव सीन दैट, राइट? सो दोज आर एयरशिप्स actually. So aeroplanes, they carry, that is one type of the air transport, and that moves in the air only and carries goods and passengers both from one place to another. आप एयर ट्रांसपोर्ट के मीडियम से, एरोप्लेन के मीडियम से ही हम लोग लाइक वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी एरोप्लेन से जल्दी जा सकते हैं, यू कैन रीच द सिटी इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम। या फिर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि फार ऑफ प्लेसेस हैं हमारे, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर इंडिया, इफ यू वांट टू गो टू कनाडा और यूएस और ऑस्ट्रेलिया, into different continents as well, then we will be using the air transport only, right? Because air transport, they are expensive in comparison to water and land, but they help us to reach our destination within a very short period of time. Okay,
Airship basically are the advertisements that you can see that they fly in the sky actually. Okay, so they advertise, they run through the, like they fly off in the sky. So those we called it as the airships. Okay, that is not meant for carrying any goods or passenger, but it is one kind of like hot air balloons. Like hot air balloons also the same thing, na? Hot air balloons also, yeah, hot air balloons also, like we use it, it also flies in the air only, right? So these are one of the ways of different ways of air transport. Jet is also one of that, which flies at a great speed. And jet basically हम normally passengers के लिए नहीं होता है बच्चों. So like armies and all, in that case we use the jet. Okay, so these are basically the different ways by which air can be used as a medium to transport the goods and passengers from one place to another. ओके, आगे चलते हैं बच्चों. हमारा नेक्स्ट है स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारा स्पेशल मीन्स क्या है? In spite of land transport, water and air transport, the we have some of the special means of transport as well, which they move for a different purpose. For example, you can have the, for example, ambulance. Then we have fire truck, garbage truck. For example, ambulance is used to carry the sick people from one place to another. Garbage trucks are used to carry the garbages and dump it in the dump yard. Fire trucks are used to these are used to like extinguish fire where we have a fire strike out over there. So we use a fire truck in that. Police car, it is used for emergency and yes, emergency and all, and for catching hold of the like thieves and all. Also, we use the police car, and that is for emergency only. And then we have the tractor. Tractors are basically used in the agricultural field. ओके, सो एग्रीकल्चरल फील्ड में हम यूज कर सकते हैं उसको, स्पेशल ट्रैक्टर, like in order to plow the field and do the different activities on the agriculture field. So these are special means. These are not like used in each and every place, but they have a special purpose by which they can be used. So these are special means of transport बच्चों. So हमने देखा अभी बच्चों कि ट्रांसपोर्ट हमारा कैसे, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: लैंड, वाटर एंड एयर, राइट? तो अभी हम चलते हैं. यस, वेयर इज आर्मी ट्रक? आर्मी ट्रक्स आर आल्सो बेसिकली, या दैट कैन आल्सो बी ए स्पेशल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बच्चों. वो हो सकता है जैसे कि दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग लाइक व्हेन वी हैव like in between two countries, when we are having a war situation or something, then at that time we can use those army trucks as well. Okay. ओके, सो ये सारा हो गया बच्चों आपका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. अभी चलते हैं नेक्स्ट, हमारा कम्युनिकेशन. ओके, सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अभी मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ? आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू. वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द कंटेंट्स विथ ईच अदर, राइट? मैं आपको कुछ समझा रही हूँ. So that is the meaning of communication. So what is the meaning of communication? When you want to share, suppose whatever I'm thinking right now, I'm telling you in the form of like I'm telling you in the form of words, right? I'm sharing my things with you. So communication basically is the means by which we share the information, ideas, messages with others. दूसरों के साथ हम कैसे communicate करते हैं? Communication nowadays is very important. If I'll not be able to communicate with all of you, then you will not understand what I'm saying, right? Okay, so communication basically is sharing information. आप information share करते हैं, ideas share करते हैं, हमारा thoughts हम share करते हैं जब दूसरों के साथ, that is called as communication. Okay, so communication can be from in between two persons, or it can be in between a large mass number of people as well. We'll talk about it in detail. Okay, so communication can be basically of different types: verbal communication and non-verbal communication. Then we have telecommunication, we have mass communication, and we have postal communication as well. So these are the different ways by which we communicate our thoughts and ideas with the person in front of us or to a large group of people. Okay.
सो लेट अस टॉक अबाउट इट बच्चों। वर्बल कम्युनिकेशन में चलते हैं। आ, ये हमारा वो कम्युनिकेशन है जो कि दैट इज डन विद यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के माध्यम से, शब्द के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट? जैसे कि आई एम अटरिंग सम वर्ड्स टू यू, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड नो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, राइट? सो दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं, लेटर्स हैं, वेर यू डू नॉट talk with someone. Verbal means basically you are talking and someone is listening, right? So the common example you can see like mobile phones, then landline telephones, where two person, there is communication in between two people, where one speaks and the other one listens, right? Yes. So landline, mobile, and all. So these are also the specific, like what verbal communication. These are the mediums. Letters also, बच्चों, हम we don't talk, but we use the words to communicate with the other person, right? So verbal communication basically is the communication that is done using the words. हम शब्द के माध्यम से verbal communication करते हैं, right? Yeah, I have got a query here. Why hot air balloon is considered as a special one? Because we do not use it like every time, na? These are specifically used at different places. We have a purpose for using the hot air balloons. Hot air balloons, for example, like if you visit to a particular place, if there is a facility, if there is entertainment for hot air balloons, you can go and explore over it. That is not used as a day-to-day transport medium. So these are special vehicles because they run in the air. So we have included it under the air transport special. Okay. Okay. Uh, yes. So the next one is what? The verbal communication. So communication जब हम words के माध्यम से करते हैं, then we called it as the verbal communication, जो हमारा दो लोगों के बीच में हो सकता है बच्चों। और वो through the words, even the letter also, writing a letter to your relative or your friend also, that is one means of verbal communication only. Okay, the next one is non-verbal communication. Non-verbal communication is a communication which is done without using words. हम बिना शब्द के माध्यम से, बिना शब्द के हम जब communicate करते हैं हमारे ideas, हमारे thoughts, then we called it as the non-verbal communication. So non-verbal communication can be of different types. अलग अलग होता है बच्चों। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव एंड ऑल, व्हेन यू सी देम यू जस्ट स्माइल एट देम, even if you don't tell, you just smile at them, and on the response they also smile at you, right? So this is called facial expression. So this is one type of non-verbal communication. Yes or no? And for through gestures as well, for example, you wave your hand to your friend also waves you back, so those are gestures. Okay, and eye contact well. Sometimes when we through eyes only we communicate. For example, suppose when your mother gets angry on you, right? So you can look at her eyes and understand कि my mom is getting angry now. राइट, मेरी मम्मी अभी गुस्सा कर रही है, मुझे आंखों से ही मुझे पता चल जाएगा, राइट? सो दैट इज थ्रू आई कांटेक्ट। और आपने देखा होगा द पीपल हु आर अनेबल टू अटर दी वर्ड्स, दोज हु कैन नॉट टॉक बच्चों, वो वर्बली ही मतलब नॉन वर्बली विदाउट यूजिंग वर्ड जेस्चर्स से अपना जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करते हैं। और ये भी देखा होगा आपने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डांसिंग, जब हम डांस करते हैं, if you all know about dancing and all, so during the dance also we express our emotions with the help of mudras. उसमें मुद्रास होता है, जो लोग डांस करें उनको पता होगा, where we have specific ways, by with your hands, with your eye movement and all, we communicate with in that way. So all these are non-verbal. That means बिना वर्ड्स के मदद से हम कम्युनिकेट जब करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चों, राइट? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन। नाउ टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली इज अ कम्युनिकेशन विच इज डन विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टेलीविजन है, रेडियो है,
फिर हमारा न्यूज़पेपर है, कंप्यूटर है, ये सारा क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हम इसको टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं। Okay, so these are like the ways by which we communicate through electronic devices. हमारा टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट जिसमें हम यूज करते हैं टू सेंड मैसेजेस, रेडियो वगैरह, ये सारा हमारा टेलीकम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर will come in mass communication because it is not electronic media. It is written here wrong actually. So radio, television, and computer, these all are the telecommunication where we use the electronic media to to transport or to express our messages, our thoughts and ideas to the listener, right? उसको हम बोलते हैं telecommunication. अभी उसके बाद है हमारा, yeah, media is here. Now we have the mass communication, right? Electronic telecommunication is electronic media, electronic devices you are using for it, right? And mass yeah, how can a radio, someone has asked me, how can a radio can be one type of mass communication, na? Though it is using electronic. I'm coming into that, please have a look. Now, mass communication is a communication where we are able to share our thoughts and views to a large number of people, right? Large number of people, that is called mass communication. So through the television you can communicate something. For example, आपने देखा होगा बच्चों, जब सपोज हमारा जो वेदर का अपडेट होता है, वो हमारा मतलब हम कैसे पता चलता है हमें कि आज का वेदर कैसा है, या फिर यू विल बी हैविंग अ साइक्लोन इन नियर बाय फ्यूचर एंड ऑल दैट, सो दैट वी डू बाय द मास कम्युनिकेशन थ्रू द टेलीविजन. Then we have the radio as well. Though radios are not radio, also we have like you must have seen the radios playing at your cars, or you might be having a radio like a device as well with you. So they also help in mass communication. They're electronic media, no doubt, but they also help in mass communication, communicating the messages to a large number of people, right? And yes, magazine and newspaper, these are written, things, but they can communicate to a large number of people as well. Newspaper में अगर suppose yeah, mass communication, newspaper will come in mass communication because हम बहुत सारे लोगों को, जैसे कि what is happening in our country day to day life, so how would you know sitting at your home? By reading the newspaper. न्यूज़पेपर की मदद से हम पढ़ के we can understand कि what is happening in other countries as well. So this is called as the mass communication. mass मतलब बहुत सारे लोगों को जब हम, yeah, a magazine can also be a mass communication because you are expressing your thoughts and that is read by a lot of people. So that is also one of the mass communication only. Okay. I hope you all have understood. Let us go to the next one. Then we have the postal communication. You can see letters, inland letters, postcard. Nowadays, these are not used as much. Their utility has decreased. But these all are in the postal communication where we have like a postman delivering all of these into different places. So postal communication is done with the help of letters, inland letters, postcards, where we have these letters and all. You can communicate by writing with the help of words only, and these postal communication are present. They are available in each and every city. But nowadays their utility has decreased because nowadays we are using phones, which are more easy way to communicate. Okay, and regarding and emails and all. So postal communication has now decreased, but through the post only, like through the stamps, letters, postcard, inland letters, all these are postal communication. Where we have a postman, the letters are transferred through the trains and then they reach another city. For example, suppose right now if I send something from Bangalore to Bhubaneswar by writing a letter, so that will go through the train only, okay? And it will reach over there. There will be a stamp based on it, and then whoever I have sent, you have to write the receiver's address over there. Sender address is there, and what the stamp will be there. So the person who is sitting, who is in other city, can receive it, and that is done by the postman. Okay, so postal communication is the communication that is done through the post. Okay, the post means the letters,
then inland letters we have, then postcard we have. All these are ways by which you can communicate. For example, you are writing something, right? You are writing a letter to your friend who is in a different city. For example, from Hyderabad to Bhubaneswar or from Punjab to Haryana. So what you would do? Then you need to write letters and post and put it in the post box, right? So the post only, the postal communication, so that will reach the your friend because address, sender's address and everything is there, and he can receive it. He or she can receive it. So these are all the postal communication. Okay, let us go to the next part बच्चों. Maps and directions आपका है. So map और directions में क्या अंतर है? Let us try to understand. आपने बहुत सारा मैप देखा होगा, गूगल मैप आप लोग यूज करते हैं, राइट? सो मैप बेसिकली इज अ डायग्राम और इट इज अ ड्राइंग एज वी कैन से ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. एक पर्टिकुलर आपका अटलास होगा आपके पास. यू कैन सी द इंडिया मैप ओवर देयर, फिजिकल मैप इज देयर एंड द पॉलिटिकल मैप इज देयर हैविंग द सिटीज एंड ऑल. फिजिकल मैप में आपका माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, हिल्स, ये सब सारे रहते हैं, right? So map is a diagram or a drawing. What is the meaning of map? It is a diagram or a drawing of a particular place on a paper. We call, or which is done on the paper, we call them as the maps only. Okay, and direction means किस दिशा में आप जा रहे हो. In which way you, a person or a thing is moving, that is called as the direction. So what is maps? What are maps and directions? Let us have an idea now. So you can see here बच्चों, आप देख सकते हैं. मैप्स और डायरेक्शंस में मैप बहुत तरह का हो सकता है. आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है बच्चों. आपका सिंबल्स हो सकता है, कलर्स हो सकता है, लाइंस वगैरह हो सकते हैं. सिंबल्स होता है, आपने डिफरेंट वेज ऑफ मैप आपने देखा होगा. सिंबल्स में क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड कहाँ पे है दिखाया गया है, पार्क कहाँ पे है दिखाया गया है, हॉस्पिटल कहाँ पे है दिखाया गया है. आपने देखा होगा जब जब कभी आप कोई मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि कहाँ किस किस जगह आपको जाना है मॉल में. अ मैप इज देयर. सो इवन इफ यू आर अनेबल टू लोकेट योरसेल्फ, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे हैं बच्चों. तो वहां पे हम क्या करते हैं, लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप ओनली. तो मैप में आप जा सकते हैं, यू आर हियर लिखा रहता है, आपने देखा होगा, राइट? सो उसी के हिसाब से हम जाते हैं. तो देयर वी हैव सिंबल्स फॉर इट. And whenever you represent like a country or a continent, then we have, or like forest and all that, we use colors in order to make a map. Okay, so physical map, political map of world और country specific area तो हम use करते हैं. लाइंस वगैरह भी हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, जैसे कि रेलवेज का एक है, मेन रोड का है, रिवर का एक है. दैट ऑल्सो कैन बी ड्रॉन एज अ मैप एज वेल. सो ये सारे क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ है मैप्स आपके, डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्लेस और एन एरिया ऑन द पेपर. ओके, उसके बाद है हमारा या विल बी डूइंग द क्वेश्चंस विद इन सम सेकंड्स. एक्चुअली डायरेक्शंस में बच्चों आपने देखा होगा, डायरेक्शंस में आपके 4 मेन डायरेक्शंस होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. एंड देन वी हैव द अदर डायरेक्शंस, द subsidiary directions, north east which is in between north and east, north west in between north and west, then south west in between west and south, and southeast in between east and south. And you all, everyone knows, like the sun rises in the east and sets in the west, right? Yes or no? So these are the directions. So directions आपको डायरेक्शंस में आपको पता होगा कि हम कंपास का यूज करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट इट टेल्स अस, इट विल हेल्प अस फॉर नेविगेशन एज वेल. दोज हु नेविगेट ऑन द वाटर बॉडीज, उनमें कंपास होता है बच्चों, एक डिवाइस है जो कि आपको हेल्प करता है लोकेट करने के लिए कि इन विच प्लेस यू आर देयर, इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग. ओके, सो दैट इज अबाउट द डायरेक्शन. Now the last part is the road signs and all. So road signs basically are the different symbols, as you can say, which gives us different ideas. Slippery road you have, turn right. You must have all of these things you must have seen while you are traveling on the road. रोड में जब हम चलते हैं तो ये सारे आपने देखे होंगे बच्चों, राइट? सो वाइल्ड एनिमल्स अगर हैं, या फिर आपने देखा होगा जब हम थोड़ा सा कंट्री साइड इंटीरियर में चलते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स का ही सिंबल रहता है. नैरो रोड है, रास्ता मतलब चौड़ा था लेकिन सडनली नैरो हो गया,
ओके, तो उसके हिसाब से नैरो रोड रहता है। अनइवन रोड, आपके बम्प्स हैं, हम्प्स होने से भी आपका अनइवन रोड होता है। पी के ऊपर आपका रेड का एक मतलब नो पार्किंग। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ही आता है। लाइक फॉलिंग रॉक्स, हाउ टू टर्न लेफ्ट, नो टर्निंग लेफ्ट। लेफ्ट का सिंबल है लेकिन उसके ऊपर एक है, टर्न जहां पे कर सकते हैं उसका सिंबल अलग है, राइट? So these are some of the road signs that you need to understand when you are on the vehicle on and you're traveling on the road. You are on the road. Okay, so road हमारा maps and directions, they help us to locate a particular place, right? वो locate करते हैं कुछ particular जगह. For example, आपका hospital भी अगर पास में है तो हम पता नहीं है. Suppose while you're traveling you got sick. How do you know that where is the hospital? तो नॉर्मली क्या होता है ना, हॉस्पिटल का जो सिंबल होता है वो रोड के ऊपर होता है. आपने देखा होगा, खाने के लिए भी होता है. देन वी हैव फॉर रेस्टिंग ऑल्सो वी हैव, राइट? सो थ्रू दो सिंबल्स वी कैन बी knowing where you are going. Okay, last one is the safety rules बच्चों. तो safety rules you should follow when you are at on the road, at school, at home and on the playground. So just have a look. I'm just giving you some time for it. The first one, you should cross it through zebra crossing. Then while the signal is there, you should not cross on that side. And while you're crossing also, you should look left and right, right? And when you are riding a bicycle, you need to put helmet and kneecap on it as well. While you're skating also, that also you should need to put, because if you have accident, then you'll not be affected. These are some of the examples when where you have to follow the safety rules when you are on the road. Then for school also, you should not run on the stairs. You should follow the teacher instructions. You should be very careful, like while you're walking on the wet floor. Then you should keep your classrooms neat and clean. Then you should not never bully anyone, right? Or neither be bullied by yourself as well. Okay, then we have safety rules when you are at home, because you all are young children, you are not acquainted of using all of these things. So you should not plug anything without your parents. You should not open the door for strangers, right? You should not put your fingers in the plug socket, and you should not try to use a matchstick. Okay, and also you should not go near the oven where something hot is boiling, right? So all these you need to follow. देन ऑन द प्लेग्राउंड एज वेल बच्चों, प्लेग्राउंड में भी आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए. स्लाइड डाउन करना चाहिए, उल्टा नहीं करना चाहिए. प्लेग्राउंड के कुछ रूल्स होते हैं वो भी आपको करना चाहिए. एंड यू शुड बी शेयरिंग द थिंग्स विद अदर्स. यू शुड वेट फॉर योर टर्न, आपके टर्न के लिए वेट कीजिए. Do not bully anyone in the playground as well. You should be kind with others as well. So these are the safety rules that we need to follow, like when we are at school or at home. uh, then we should follow all these safety rules बच्चों. So बच्चों, ये आपका कंटेंट हो गया है. चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों. ओके, तो हमारा क्वेश्चंस अभी है, या ओके, yes. So these are the questions. So we'll be starting from question number 1. ये आपका हो गया. Okay, चलिए. So all of you are ready? It's 8:54. I know, dear, but I have to discuss the content. Then only I can move ahead. We'll be doing it fast. So I want everyone to write the question number and then the answer, whichever you think it is the good. Sorry, is the correct answer. Okay, the first one. The object shown here is related to dash post office, railway station, bus stop, and telephone exchange. This answer is very easy. Manoj has already answered 1A. Sampun as 1A. Yes. Surya Modi, Bhabesh. Yes. Post box, बच्चों, ये हमारा post box है, right? Post office is an area where the letters, inland letters, come into a particular place. We call it as the post office. You must have seen a post office in your, like wherever you're living in your neighborhood. तो पोस्ट ऑफिस में ही हमारा सारा लेटर्स आता है एरिया के हिसाब से. सो आपका ये आंसर होगा 1A बच्चों. is related to post office. That means post office is the hub where the postal communication is done, right? So उसमें आपका ये है post box. अगर आप लेटर कभी भी देना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, लेटर लिख के आप इसके अंदर ही डालेंगे, right? Then the postman will come at his particular time
and he will take out the letters and check where it is supposed to be sent. It will be sent, it will be stamped, it will be sent to that particular place. Okay, so ये हमारा है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, एंड the thing is shown is the post box. I've already got answers for 2B. Everyone has answered already. Select the odd one out on the basis of means of transport. So हमारा bicycle, auto and bus, these are run on the road, whereas the aeroplane, it runs in air. So it is the air transport. So obviously it is the odd one out. So 2B is the answer for this question. Very good बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने already answer दे दिया है. Excellent. I'm going to question number 3 now. Which of the following map symbols will help you to locate a nearby well? Well आपका कहाँ पे होगा? Right? So ये आपका, मैंने road signs आपको बताया था. So we have to find out which is locating to the nearby well. So ये आपका आंसर होगा 3 का D. Very good, because it symbolizes that a well is there. Okay, so आपका आंसर होगा 3 का D. Okay, so 3D is the answer. Many of you have answered it as well. No, it is not the nearby well. B is not the nearby well. It is wrong. So answer will be 3D. ये हमारा जो सिंबल है नियर बाय वेल के लिए, हमारा ये D है बच्चों, दो जो कि हमें हेल्प करता है कि लोकेट वेल इज नियर बाय. ओके, सो आंसर होगा आपका 3 का D. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए. You have to match the columns actually. 4 has already answered for A. Anaya has answered already. Anaya Shahani, Manoj Khatai. 4A is the answer. Very good. Yes. 4A is the answer, bachcho. 4A is the answer for this option. This for question number 4. A is the option correct one. Let us have a look. Ship is for harbor. Harbor is a place where all the ships come and wait. Okay, it is a place. So harbor is the one. Helicopter we use for like what, a shorter distance, and it can land on a small place, right? So that is called helipad. So helicopter is related to helipad, then aeroplane is related to air transport, and steamer is related to water transport. That I have already discussed बच्चों. Steamer हमारा एक शिप की तरह ही होता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट है. सो हमारा 4 का आंसर होगा ए. वेरी गुड बच्चों, आप सब लोगों ने आंसर दिया है 4 का ए. अनुराग 4C नहीं होगा. 4A is the answer. All of you have answered it well. Bhagyalipi, Bhagyabala, Prachiranjan, Tapan Kumar, Shrikant, Bhagyabala. Very good, bachcho. Surya Modi, Bhaskar. I'm not reading everybody's name, so please don't get upset. Somya Mahanti, if I skip out your names. Okay. So 4A is the answer for this question. Now I'm going to Shrikant, and Bhaskar has already answered. Now question number 5, bachcho, देखिए. Select the correct option regarding the vehicle shown here. So this is a postal van. Post office has got a lot of like things in there. Okay, for example, post office, post box, postal van. So these vans carry the letters, messages from one place to another. Okay, so it is a special means of transport. Yes. It carries post, letters, parcels, etc. from one place to another. Yes. It carries policemen and criminals. No. Right? So what will be the answer for 5? 5D. Very good. Yes. 5D. Bhagya Bala has answered 5A. Tapan Kumar, Manoj Khatai, Bhagya Bala. 5A is not the answer, dear. D is also correct, na? So we have to choose D as the correct option. 5D. Shrikant. Snehanjali Parida, she is giving only good morning right now to me, messages. Okay, so 5D is the answer, bachcho, both A and B. Question number 6, देखिए. Sakshi while driving, Sakshi while driving sees the following road sign. She should do what? So you know this is the symbol of the hospital. Anna has already answered. Sandeep Raju, very good. Holiday food and craft. Manoj Khatai, very nice. So answer will be stop blowing horn. आप horn blow नहीं करेंगे in near the hospital because patients are there. They are very sensitive to all of these sounds and all. So you should stop blowing horn over there, right? Now let us go to the question number 7 and 8 बच्चों. ये थोड़ा ध्यान से देखिए. आपका एक मैप दिया गया है. A map has been given on the paper.
Refer to the given picture and answer the following questions. So you have different locations given here: school, shop, trees, post office, park, bus stop, Sonia's house. Sonia is there and tree is there. Okay. And right hand side, you can see it is written north, right? So that means north is in that direction. So opposite will be south, and on the right will be east, and the left will be west, where I'm sitting. Okay. So we have to select the correct option regarding the given picture map. सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा 7 का, ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। 7B, 7B, तपन कुमार, 7B, 7B इज द आंसर और नॉट? लेट मी चेक बच्चों, देखते हैं। हॉस्पिटल इज एट नॉर्थ टू द स्कूल। हॉस्पिटल स्कूल के नॉर्थ में है? नहीं। अगर स्कूल के हिसाब से देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्कूल, इट इज इन द साउथ, सो इट इज अ रॉन्ग वन। स्कूल इज एट द नॉर्थ ईस्ट टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्कूल है। या इट इज करेक्ट। When you consider the post office north, school will be in the northeast. So this is the correct answer बच्चों। 7B हमारा ही correct answer होगा। 7B is the answer for question number 7. Okay, then Sonia's house is at north to the hospital. No, हॉस्पिटल के हिसाब से सोनिया का घर नॉर्थ में नहीं है। हॉस्पिटल के हिसाब से इट इज इन द साउथ, राइट। शॉप इज एट द ईस्ट टू द स्कूल। शॉप हमारा कहाँ है? हाउ इट इज ईस्ट? ये तो हमारा वेस्ट हुआ ना। If you consider the school, just look, see the north direction and then you have to answer this question. So ये हमारा क्या होगा? School is at the northeast to the post office. So this one is correct because rest all are wrong. Okay. So yes. So answer is 7B is the answer. B option is the correct one. So answer is 7B. Very good. Bhagyawala, Lipsa, very nice. Many of you have answered it well actually. 8C you have already answered. Let me check whether it is 8C or not. Okay. Yeah, I can see many of you just doing symbols and all, not paying attention. Why, बच्चों? ध्यान दीजिए. Okay. Yeah. How can you guide Sonia to reach school from her home? तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा मैप के हिसाब से. How can you guide Sonia to reach home? Okay, that we have to answer. Straight, right. Okay, so actually these we have arrows in between. So we have the first option. Let us see whether she will reach home or not. Means from the school, सॉरी, घर से वो अपना स्कूल जाएगी। कैसे होगा देखिए, पहले स्ट्रेट जाएगी, फिर राइट जाएगी, राइट, फिर हमारा लेफ्ट जाएगी, फिर लेफ्ट जाएगी, फिर राइट जाएगी एंड देन राइट। शी कैन रीच द स्कूल। या दिस कैन बी करेक्ट वन, राइट। एक्सक्यूज मी बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। एक मिनट, ये भी देखते हैं ये सही है कि नहीं। नॉर्थ में पहले जाएगी, ओके, नॉर्थ मीन स्ट्रेट, राइट, फिर ईस्ट जाएगी, ईस्ट, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। जो आपका राइट लेफ्ट है वो आपका ईस्ट ही है ना, ईस्ट। फिर सीधा जाएगी नॉर्थ, फिर वेस्ट जाएगी, फिर नॉर्थ जाएगी, फिर ईस्ट जाएगी, राइट। सो ये तो सेम ही हुआ ना, ए एंड बी बोथ आर द सेम, राइट। सो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। ओके, सो लेट अस चेक। सो आंसर होगा आपका 8 का डी आंसर होगा बच्चों। 8C is not the answer, 8D is the answer. Tapan Kumar Mahanta has written 8D. So this is the correct one. Please see this one carefully बच्चों, नहीं तो आपको confusion होगा. You cannot find the answer for it. Okay, C देखते हैं। C सही गलत क्यों है देखते हैं पहले। पहले वो नॉर्थ जाएगी, करेक्ट, फिर लेफ्ट जाएगी, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया बिकॉज शी हैज टू गो राइट। हाउ कैन शी गो लेफ्ट टू रीच द स्कूल? देयर इज नो वे ओनली, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन ओनली। हाँ कि नहीं? सो आपका 8D आपका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। हाउ कैन यू गाइड सोनिया टू रीच स्कूल फ्रॉम हर होम? दैट इज बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। ओके, सो दोनों ऑप्शंस ए एंड बी आपका करेक्ट है, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सो 8D इज द आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मैप, इट इज इंपॉर्टेंट बच्चों। एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है। ओके, TR पेट्स लव, मैम प्लीज सी मी, हाउ वुड आई सी यू बच्चा? ओके, okay. Surya Modi has written 8D. Many of you have done it. Bhaskar, Anurag, Tapan Kumar, very nice. Okay. Now I'm going to question number 9 बच्चों देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। रीड द गिवन वर्ड ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका एक वर्ड ग्रिड है, देखिए। तो वर्ड ग्रिड में हमें वर्ड ग्रिड को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर देन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी वर्ड्स। फर्स्ट हमारा क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू पोस्टल कम्युनिकेशन और हिडन इन द वर्ड। तो मैंने आपको हिडन इन द वर्ड ग्रिड, मैंने आपको क्या कहा, पोस्टल कम्युनिकेशन से क्या क्या हो सकता है, पोस्ट बॉक्स बॉक्स हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, स्टैम्प हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, फिर पोस्ट हो सकता है। ये सारे वर्ड्स आपके रिलेटेड हैं पोस्टल कम्युनिकेशन से। सो देखते हैं इनमें से कुछ वर्ड अगर हमारा होगा बच्चों। आप देखिए, आपका पोस्ट है, POST, like 3, 4, 5 and 6th column E is there, but that will P will be there. So P post, under it stamp is there. Children, in this word grid, in the place of E, the P should be there actually. Otherwise, it will not come correct. So I'm talking about 1, 2, 3, 4, 5, 6th column. Okay, 6th column आप देखिए बच्चों, post and letter. Yes, post letter is there. And let us check whether you have other. Stamp is also there. Letter is at the end row. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the ninth row, you have letter, right? Ninth row, you have letter. 8D is the answer. Yes, 8D is the answer. बच्चों 8 का D, 9 का भी बोल रहे 8 का भी D आंसर है. D is the answer. 9 का भी D आंसर, D ही आंसर होगा. मानव दास is already answered. ऋतुपूर्णा 9B, नो बच्चा 9B नहीं होगा आपका. 3 वर्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी. पोस्ट है, स्टैम्प है, लेटर है. ओके. सेकेंड वन इज व्हाट, हाउ मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. सो पहले देखते हैं हमारे रो में. कार आपको देखने को मिलेगा, कार है बच्चों. सेकेंड रो में कुछ भी नहीं है. थर्ड रो में नथिंग इज देयर. फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो नथिंग इज देयर. सिक्स्थ ऑल्सो नथिंग इज देयर. देन वी हैव बस. सो बस इज देयर इन द सेवेंथ रो. ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो रेस्ट नथिंग इज देयर बच्चों. तो आपका आंसर होगा 9 का डी. ओके, सो 3 वर्ड्स रिलेटेड टू पोस्टल कम्युनिकेशन है हमारा, पोस्ट, स्टैम्प एंड लेटर. और हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है कार एंड बस. ओके, सो आंसर इज 9D. ओके, वेरी गुड. लाइफ ऑन कैमरा विद परी, भास्कर पात्र, वेरी गुड. 9D. अनुराग, तनीश, प्राची रंजन, सैस फ्यूजन, वेरी गुड बच्चों. सो आपका अनुस्मिता मलिक, राइट, वेरी गुड. 9D होगा. 10 का देखते हैं. 10 का आंसर ऑलरेडी Ananya has already answered 10 ka. Ananya Sahani. Okay, select the best suitable means of uh, communication to get information or to inform others for the given situations X and Y. So what are the situations you have here? Your sister's marriage has been fixed and you want all your relatives and friends to be present at the wedding. And in X and Y is that your grandfather suddenly fell down and injured his leg and your father is in his office. Right? So we have to search which one is the correct. 10B, all of you have answered 10B. Okay, let me check then. Okay, A is radio and email. No. Your sister's marriage, you cannot tell it in radio to everyone, right? So that is wrong. Letter and telephonic call. Yes, that is correct. Why? Because sister's marriage, though the postal communication is slow, but you can write letters and send it to your relatives to be present at the wedding, right? 10B is the answer बच्चों. और दूसरा है टेलीफोनिक कॉल. टेलीफोन से भी आप बता सकते हैं. दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे. यू कैन कॉल योर फादर एंड से दैट योर ग्रैंडफादर हैज गॉट एन इंजुरी इन हिज लेग. सो आंसर विल बी 10B. 10B हमारा आंसर होगा. वेरी गुड. एवरीवन इज आंसरिंग इट करेक्ट. एक्सेलेंट बच्चों. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. चलिए बच्चों 11 देखते हैं. which of the following are depicted by the given symbols. given symbol जो यहाँ पे है उसमें से कौन सा आपको दिखा रहा है. फर्स्ट हमारा क्या है, एक है, आप देखिए इस सिंबल से रेलवे, ये रेल क्रॉसिंग है लेकिन गार्डेड है. कभी कभी क्या होता है ना, रेलवे क्रॉसिंग आपका अनगार्डेड रहता है, कोई रहता नहीं है. सो दैट सिंबल इज डिफरेंट. सो हियर वी हैव द गार्डेड रेल क्रॉसिंग एंड द अदर वन इज द zebra crossing, right? So pedestrian crossing is there. So answer will be 11D. Very good. Yes. So you all have answered it 11D. Very nice, बच्चों. Ritupurna, Tapan, Prachi Ranjan, it is not C. It will be D. Okay. You have just reversed it. Okay. So answer will be 11D. First one is guarded rail crossing. And the second one is pedestrian crossing. Pedestrian मतलब जो चल के जाते हैं. We call them as pedestrians. Okay. And then they walk on the zebra crossing.
that is used to cross the road. What is question number 12 answer? Also, I got it already. 12 B and D, so many as confusion is there. Okay, which of the following is a special means of transport? Ambulance and fire engine, police jeep and metro, post van and steamer, submarine and sailboat. If you look into both of them, okay, then they are all incorrect. Both of them cannot be correct, right? So answer will be ambulance and fire engine are the special means of transport that run on emergencies. Ambulance, they help to carry the sick people to the nearby hospital. Fire engine, they run in order to extinguish fire if you have a fire breakout at a particular place, right? आंसर होगा आपका 12 का बी. ओके, चलिए चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं. Fill in the blanks in the following sentence by selecting the correct option. It's very easy. X and Y are the means of mass communication. So आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए. Let me see who is the first one to answer this question. Question number 13. आपका कौन सा है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस? क्वेश्चन नंबर 13, लेट मी सी. 13D, टेलीफोन एंड रेडियो आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ओके, टेलीफोन इज नॉट अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बच्चा, वो गलत है. 13D is not the answer. Then I got Bhaskar and Rutupurna as 13B. Let me check. Telephone and letter. No, it is also wrong. हाउ कैन टेलीफोन बी ए मास कम्युनिकेशन? मास मतलब हम जब ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, अपने व्यूज आइडियाज या फिर थॉट शेयर करते हैं, तो मास. टेलीफोन तो हम लोगों के बीच में होता है ना, या फिर 3-4 लोगों के बीच. सो इट इज नॉट मास कम्युनिकेशन ना. सो आंसर विल बी 13. आंसर विल बी, लेट मी चेक, टेलीविजन एंड लेटर. नो. सो व्हाट इज द आंसर? I got the first answer. Manoj has written 13A. Yes, children. 13A is the correct one. Why? देखिए, इंटरनेट आपका है, आप इंटरनेट में आपका न्यूज आता है कि नहीं? सो दैट इज अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन ना, दैट इज एक्सेसिबल बाय एवरीवन. वो बहुत सारे लोगों को जाता है. आपका जो न्यूज़पेपर वगैरह है, उसका ई न्यूज़पेपर आपको मिलेगा इंटरनेट पे. सो दैट इज अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन ओनली. हाँ कि नहीं? फिर मैगजीन, मैगजीन भी आपका मास कम्युनिकेशन ही होता है. मैगजीन्स जो पब्लिश होता है, सारे मैगजीन्स पर्टिकुलर टाइम में, सो दैट दोज आर मास कम्युनिकेशंस ओनली. सो आंसर विल बी 13A बच्चों. एक्स है हमारा इंटरनेट, वाई है हमारा मैगजीन, एंड दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. बाकी कुछ भी आपका मास कम्युनिकेशन नहीं है. टेलीविजन मास कम्युनिकेशन है, रेडियो मास कम्युनिकेशन है, लेकिन टेलीफोन, लेटर, ये सारे हमारे मास कम्युनिकेशन नहीं है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट 13A is the answer. Okay. Then going to question number 14 now. 14, Bhagyabala, Bhaskar have already written A as the answer. Holiday food. Rutupurna, 14D, Tapan, okay, so many Tapans. Okay, yeah, let me check which of the following statements are correct. Mobile phones can be carried from one place to another. Yes. Communicating through facial expression in the dance is called bhavs and mudras. Yes. Mass communication is communicating to a small group of people. No. Television is only meant for listening programs. No, because we can listen and see both in television. So 1 and 2 are correct only. So what will be the answer? 14A is the answer, bachcho, right? Yeah, 14A is the answer. Yeah, Rutupurna, Bhagyabala, Anshumita, very good बच्चों. So 14A आपका आंसर है. Mobile phones and are carried, can be carried, and communicating facial expression through dance is called bhavas. So 14A is the answer. Going to question number 15 now. Which of the following words on unscrambling gives the name of a means of written communication? Okay, written communication. Yeah, I know it's 9:14, bacha. We have still time. We can solve 2 more questions as well, right? So, which of the following words on unscrambling gives the name of a means of written communication? अगर आप उसको unscramble करेंगे बच्चों, 15 का आंसर कोई मुझे दे सकता है क्या? No, 15A is not the Anaya has done it first correct. 15, Anaya Samuel, 15B is the answer. Very good. Because if you unscramble, these are scrambled, if you unscramble them, first one will be telephone, second one will be newspaper, third one will be radio, and fourth one will be what? टेलीविजन. हाँ कि नहीं? तो इसमें रिटन कम्युनिकेशन कहाँ पे है आपका? आपका न्यूज़पेपर है, उसमें लिख के प्रिंट होके आता है ना.
तो आपका 15B is the answer, right? Yeah, Anshuman. Malik, very good. 15B, Bhagyalipi Bishwal, very nice. Yes, so 15B is the answer. And then we have the 16-1. Yeah. 16 is study the given Venn diagram and identify X. So what can be X here? That means it is a written way of communication and mass communication as well. So 16, what will be the answer, bachon? Television, postcard, then you have magazine and aerogram. Okay, so what will be the answer for question number 16? So we have something which is a written way of communication and it is mass communication as well. So what will be the answer, bachon? 16 ka, right? Aerogram is not a mass communication. Okay. Postcard is not a mass communication. Television is a mass communication, but it is not in the written form, na? The written way. So what will be the answer for this one? Magazine, obviously, right? So 16C is the answer for this question, right? 16E postcard is not a mass communication, bachcho. Mass communication is for when you deliver to a lot of people, large number of people. So आपका 16 का आंसर होगा बच्चों C. ओके 16 का आंसर होगा आपका रिटन वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन एज वेल ओके बच्चों इट्स ऑलरेडी टाइम थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फिट एंड फाइन सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ थैंक यू ऑल गुड नाइट एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर पेरेंट्स एवरीवन हु इज नियर यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके चलिए बच्चों गुड नाइट टेक केयर बाय बाय